Bismillah Rahman Rahim. Very good morning, good afternoon, and good evening to everyone who is attending and watching this webinar today. Today, as part of a new episode of Technovation with Ahmad Javaid, we have brought a very relevant and important topic once again, which is building an AI-driven organization from strategy to execution. Today, I have joined with a very powerful panel once again, and which will be engaging with audience in order to learn and get more recommendation and advices from our experts panel, how effectively we can develop and execute AI adoption strategies within our organization. So without any further ado, I would like to request our respected panelists to please introduce yourself, starting from Arif Sab. Assalamualaikum. Alaikum assalam. ArifShaikh, I've been in this industry for last 27 years now. Normally जो है मेरा जो ताल्लुक है इस वक्त आजकल Progatix एक organization है which is working in the USA since last 23 years. So development of any kind, customization is our expertise. हम कोई एक single product पे काम नहीं करते. We have alhamdulillah कोई 80 plus members working over here, only developers. बाकी staff हमारा तकरीबन 150 का है. So normally I look after cyber security, infrastructure, compliance, audit. ये सारी चीज़ें मैं ही check कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और cross integrations वगैरह भी. So that's it. Pleasure to have you, sir, on the panel, and we're looking forward to learn a lot from your side. So moving to our respected panelist, Mr. Jamil. Jamil Saab, your introduction, please. Assalamu alaikum ji. Basically, I am working in SSGC as a group head IT. We have some subsidiaries as well. So I look after all the functions within SSGC and our sister concerns. So by profession, I am an engineer, and being the head of IT, we have quite a few opportunities in artificial intelligence. And as you know, it's also need of the time. So we also keep on exploring that what we can do in AI. And in fact, we have built some prototypes for that as well. Glad to hear that, and that it is indeed our pleasure to have you, sir, on the panel. But for the greater benefit, because our audience is all around from the globe, and most of the people who are watching us from outside Pakistan may not know what is SSG. If you kindly tell us a bit more about this. Okay. In fact, SSGC is Swiss Southern Gas Company. We are one of the largest gas transmission and distribution company in Pakistan, and we are operating in Sindh and Balochistan. Almost 60 to 65% of the geographical area of Pakistan is served by SSGC, and we provision the customers with the gas at their doorsteps. And for that we need a lot of technology, and in that technology we need a lot of compressors, and then communication channels to control, to monitor all the stuff, the gas contents through the lines. So for that we have a very big infrastructure of telecom as well as IT. So I look after the IT part of SSGC, including the business applications, the financial engines, the billing engine, infrastructure, including connectivity, compute, primary data center, and the disaster recovery site. Very interesting, and I believe that the SSG is, I think, one of the largest natural gas distributor currently operating in the South Asia. I think there's no other company more bigger than SSG, it seems, and the technology and the distribution network has been operated effectively from, I think, more than
3 decades now, if I'm not wrong. It's almost more than 5 decades, Oh, and the well, customer base of more than we are covering more than 3.2 million customers in SSGC. that's why there was a very need to have this SSG properly introduced to our audience, because there are a lot of big names currently operating in Pakistan, which are originally Pakistani owned companies and been operating from more than a couple of decades, but not been properly, marketed in the international forums. But having that, this said, like, very warm welcome, Jamil Saab, to you on the panel. And uh, now, we'll be entering into our, discussion phase, where we'll start our discussion about the topic. We're considering the current technological evolution today. We have observed exponential growth and pace, and space in technological adoption as well. New technologies are coming, and organizations are facing a lot of challenges, and very time bound decisions needs to be taken in terms of, whether we should go for a new technology or no, or we miss the market opportunities and so forth. So AI has become a transformational technology which is started impacting each and every layer of humanity, I would say. Consider starting from the governments, organizations, corporates, agencies, to the extent a normal citizen people as well. So today we'll talk about, like, the within the context of organizational, the capabilities with it, using the AI driven approaches, and based on that we will take our discussion forward. So my first question going to be, what are the foundational steps for developing an AI strategy in any organization? It's an open question, anyone would like to start with. Arif sab. जी सर। देखिए, सवाल की नौयत जो है ना बड़ी खतरनाक है। ये जो टॉपिक है ये इतना आसान है नहीं। इंडीड, इसी वजह से आपसे पूछा है। अब आप कह रहे हैं कि जी कंपनी को एआई ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, ठीक है ना। Right. इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना सबसे खतरनाक है, वो है कि हमारी क्या रेडीनेस है, आर वी विलिंग। तो जो स्टेप वन है ना वो यही है कि जी हमें मैनेजमेंट को और हम लोगों को जो है ना उस पर एग्री करना है कि वी आर रेडी टू मूव टू एआई। अच्छा, अब ये ऐसी चीज नहीं है कि दैट यू कैन होल्ड ऑन कि नहीं यार अभी रुक जाते हैं बाद में कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो होना है। अगर आप आज नहीं कर रहे, 2 साल बाद 3 साल बाद करोगे, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। Exactly. तो वो करना है। अब वो करना किस तरह है, वो प्रोसेस कैसे है, दैट्स द मेन चैलेंज। क्योंकि अभी तक शायद दुनिया में कोई हमारी नज़र में तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आई दैट वेंट मोस्टली ऑन एआई। पीपल आर डूइंग, ट्राइंग। हमारे पास भी क्लाइंट आ रहे हैं, फ्रॉम द यूएस आ रहे हैं, लोकल मार्केट से भी क्यूरीज आ रही हैं। दे आर ट्राइंग स्टेप बाय स्टेप मूविंग टूवर्ड्स एआई। उसमें सबसे पहली जो चीज़ जहाँ कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं गोइंग टूवर्ड्स एआई, दैट्स कस्टमर रिलेशनशिप। कि आपके पास कोई बॉट ऐसा है या आपके पास कोई पोर्टल ऐसा है जहाँ पे कस्टमर आके अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करना स्टार्ट करे। दैट्स द मेरी फर्स्ट थिंग, द बिजनेस पेन जिसे हम कहते हैं ना, यार कस्टमर किस तरह के सवाल कर रहा है और उनको जवाब देना है। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। आपका एक बहुत बड़ा जो बजट होता है, फंड होता है, आपने ह्यूमन रिसोर्स रखी हुई है, वो फ़ोन पे सेटिस्फाइड कर रहा है, कंप्लेन रिसीव कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके पास सारी चीज़ें ऑटोमेट में आ जाएंगी। जब ऑटोमेशन में आ जाएंगी, उसके बाद वो एआई जब उसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाएगा, तो कस्टमर की जो इंटरेक्शन है दैट विल बी मोर सेटिस्फाइड। ये अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वन टाइम इस तरह का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड योर विजन एंड योर होल थिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, उसको फोकस करते हुए फिर आपने डिसाइड करना होता है, ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। मैंने कहा ना, जैसे मोस्टली व्हाट वी आर गेटिंग कि हमें बॉट्स चाहिए जो कस्टमर डील करें। एक दो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहे हैं, वो कहते हैं यार हमें हॉस्पिटल में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको सिर्फ इतना पता करना होता है कि डॉक्टर टाइम पे आया कि नहीं आया, अगर ये डॉक्टर है आपके पास कि नहीं है। एक रूटीन क्वेश्चन है ना।
अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उसके लिए रिसोर्स इंगेज करें तो बेहतर ये कि वो एक सेटअप बना दें, वो चलता रहेगा. इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. इसी तरह और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स आते हैं कि जहाँ पे आपके एआई जो है वो बिजनेस के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता जाएगा. अच्छा, एक ये एंड है फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव ना, मुझे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा दैट कैन रन, और वो खुद बहुत इंटेलिजेंट भी होता रहेगा. दूसरा इसका पर्सपेक्टिव अगेन वही जो है वो रेडीनेस की है कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं. वो जो आपने कॉल सेंटर पर लड़के लड़कियां बिठाई थी, फारिग हो जाएंगे. ठीक है, वो एक बड़ा खतरनाक चैलेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे ना, उनके पास अलार्म क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि आज ये जा रहा है, कल मैं जा रहा हूँ. एआई व्हाट वी सी इज जस्ट लाइक अ मूवी, टर्मिनेटर मूवी ना, कि सारी चीजें जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पलेस. अच्छा, Right. मैं इसको नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स वगैरह के साथ जब डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं इनको तशवीश देता हूँ कि जब इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ था तब भी लोगों ने यही समझा था. एक यूएसए वगैरह में दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज आया था कि यार गाड़ियाँ जो हैं अब वो हाथों से नहीं बन रही, वो मशीनरियाँ आ रही. तो देखें, अल्लाह का एक निज़ाम है ना, दुनिया में आबादी कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है. वो मशीनरी आई, वो इंट्रोड्यूस हुई, गाड़ियाँ बन रही हैं, मशीनों से बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ गई, मगर सबको अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रिस्क दिया हुआ है. तो अब उसको किस तरह आपने अडॉप्ट करना है, किस तरह उसके साथ चलना है, ये वक्त बताएगा. ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमें वक्त बताएगा, समझाएगा. क्योंकि वेरी ऑनेस्टली वी आर ऑल न्यू टू एआई. हम सिर्फ अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना ख्याल तस्वर कर सकते हैं कि यार इस तरह होगा. व्हाट विल हैपन, नो वन नोज. हाँ, थ्रेट है, बड़े बड़े लोगों ने बयान दे दिए. एलन मस्क जो मोस्ट फेमस थे उन्होंने भी बयान दे दिए. एक दो और में देख रहा था, उनको भी बयान आ चुके हैं. एआई थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं. इसके बहुत नुकसान भी आएंगे सामने, और उसको किस तरह कूप अप करना है वो हमने, आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज शुरू में इस्तेमाल करा, ह्यूमैनिटी इफेक्टिंग. ये इंसानियत के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स ट्रू. जी. टेक्नोलॉजी तो ठीक है, वो बढ़ेगी, वो बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह, मगर ये बहुत सच्ची बात है कि इंसानियत के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा मसला खड़ा होता जा रहा है, और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है. अब बेशक. बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर चैट के ऊपर जाके टाइप करता है, पूरा का पूरा ऐसे लिख के देता है, जी. और उसको कॉपी पेस्ट मार के ले आता टीचर का. टीचर अवेयर ही नहीं है, उसने उसको पढ़ा, वाह वाह करी, साइन करा, दे दिया. उसको पता ही नहीं है ना बेचारी को. तो ये एक बड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, एक बड़ा एक अजीब सा सिस्टम होने जा रहा है, और होना स्टार्ट हो चुका है. हम बिकॉज वी आर टेक सेवी, वी नो टेक्नोलॉजी, तो हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं. 98% पाकिस्तान को पता भी नहीं है ये है क्या. उनको ये जो ना एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे एक मूवियों में नहीं देखा था, लोहे की गाड़ी आ रही हो तो जंगली हबशी उसको लकड़ियाँ मार रहे होते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है. तो अभी वो एआई लोगों के लिए ये है, दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इसको हमने यूज़ क्या करना, किस तरह करना. जी. अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे हिसाब जी, से एक यकीनन वो ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली जाना. एग्जैक्टली आपने बजा फरमाया. वो द राइट थिंग टू कंसिडर इज कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको सही तरह से उसके चैलेंजेस को, से रिलेटेड रिस्क को अंडरस्टैंड किया जाए, उस टेक्नोलॉजी को सही तरह से स्टडी किया जाए बिफोर वी कम अप विद. और यही बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्शन के टुवर्ड्स जो है वो बनाने के लिए ज़रूरी होती है. तो इसमें जमील साहब का ओपिनियन ले लेते हैं. जमील साहब, what do you like to add? Just I wanted to add quite a bit more in that कि बिल्कुल very rightly said कि जी AI जो है that is facilitating, but with the facilitation it's becoming a threat for the humanity as well. So first of all, in case if we take the negative side of AI, that it's becoming a threat, it can be very easily mitigating by putting proper controls and compliance to that. Regular audits, as we used to do for our ordinarily system which are deployed in the organizations. So what we can do is that we can make that audit mechanism more tight and strong, or that can be managed through the AI based audit system also. Now we can see that almost all the companies are moving towards the adoption of AI plugins, tools, and agents.
So, as Mr. Sheikh said that AI, most of the Pakistani community, they are almost 90%, as he said, are unaware of AI. But if we see the adoption of AI, to me it seems that it's very, very fast. Because before 1 or 2 years, I think very small number was aware of that AI technology. But if you see the various gadgets in our life, Apple has launched its AI agent, its AI component. Samsung is offering that. Microsoft has launched Pilot, and even the financial systems, various financial applications, which we see are very majorly used, like Temenos. They recently launched their AI agent for that. Oracle has already provided a plugin for AI, and they are very aggressively following that. SAP has launched Joule. So, what's that? As soon as we will keep on utilizing these tools, even in a very proper manner, or if not, if occasionally, we will have some awareness about the AI. And like we learn a lot by hit and trial as well. If we will just keep on trying various options, and we will explore various provisions that what this tool can do for me, we will see that it's helping us a lot. But apart from that, as Mr. Arif said, that a student will just search for an essay, he will copy paste, give that to his teacher. So what we need to that, we need to empower them with those counter tools. Anti-plagiarism tools are there. They can very conveniently use that, though the cost will be much higher initially. But later on, you need those tools. If you are not going to use those tools, then your growth will be totally stopped. So, with the use of various tools in the Explorer, in Windows, in mobiles, in tabs, in laptops, in applications, we will be learning this AI fractions very rapidly. Just referring to an example that back in 2016, LinkedIn published a report in which they said that by 2023, 50 to 60% of the jobs will be switched from one profession to the other. Reason being that with the implementation of AI, the tools which you need for various organizations, for enterprises, you will be going to have the skill set for those implementations, not for the conventional stuff which we are using as of today. But after the generative AI, after 2017, this number is drastically changed. And now they say that for the initial 6 7 years, the percentage of shifting of career from an ordinary skill set to the AI based means programming and learning and various tools which we are going to factor in the AI was 50 to 60%. But within the next 1 year, after the means the utilization and innovation of that generative AI, they say that it's going to be more than 90% within 1 year. So if Right. that numbers are going to be increased so drastically within 1 year, that it took almost 7 years to reach up to 50 60%, and for the next 30%, which is quite difficult, that after attaining something, even a single percent takes a time and efforts. But we can see that they are very conveniently publishing that for the next 30%, it's not going to take more than a year time. So, with that innovation, with that adoption, I hope that people are going to learn a lot about the AI tools and their utilization. No, I believe that we started feeling the effect of that even nowadays as well, because those things which have been forecasted to happen down the line, towards the end of the decade, it started happening now. I mean, the recent launch of Optimus robot from the Tesla, it's been started now in the market to be sold out. On the other side,
There's a lot of use cases which are affecting each and every endeavor of the life today. But let me take our discussion to be towards a more focused aspect of where I want to take the our audience with, is that Jamil sir, what do you think that what effort and organizational management or leadership needs to put down to ensure the AI adoption alignment to serve their broader business goals? Because each organization have its own business goals to achieve, part of expansion, sustainability, whatsoever. Now, considering that the long term, mid-term, long term strategy for a business expansion and the sustainability, how the AI adoption needs to be aligned with, what effort management needs to do. Well, if we see the means utilization and means outcome of AI, that is improved efficiency, Mhm. accuracy, and adoption of technology with means we want to achieve a lot with lesser time utilization. So for that, what an organization can do is that they can first focus on their processes and primary goal. In the strategy, they need to clearly define that what exactly that company is meant for, and from that strategy, what we can do is that we can extract those goals which are very primary for achieving the goals and visions of the company, whatever they have decided. Like if I consider SSGC, our primary goal is smooth supply of gas to the customers. So in this process, whatever used case we are observing, we need to focus on that. Like a process which is repetitive, we need to do each and everything after certain time on a certain date. What we can do is that by the utilization of AI, we can automate that. By automating that, what we achieve is that we don't need to do that again and again. Rather, it will be executing on its own. But one thing the organization need to do is that the organization need to put some proper controls plus the audit of those processes. Okay, one fine day you see that I implemented that AI program. I learned through my programming logic. I trained the system, and for the past 15 days, the system is not working. So first of all, the system which is implemented need to be verified regularly, and the outcome of that AI tool, that need to be monitored very religiously, because the outcome need to be improved day by day. And for improvement, we need to monitor, we need to collect logs, we need to review those logs and check that what are the lackness in that, and those lackness can be factored into our system so that the process is improved more and more. Very very focused strategy with proper monitoring, logging, regular review, that can make AI model to be a success for an organization. Exactly. I think you spotted on the bullseye, because the if we do not ensure our core business goals are aligned with the AI adoption, and that the to achieve the long term goals where AI technology can contribute in, there's no point in putting all those efforts and started using the Copilot or Llama or Chat GPT for without identifying the core purpose of it. So coming to Arif Sab, what's your take on this thing? Like what management, what additional steps they need to do in order to ensure that AI adoption is aligned with their broader business goals. जमील भाई ने बिल्कुल सही कहा, और यही स्टांस है सबका। बेसिकली जब तक ओनर्स या बिजनेस जो है, दे डोंट हैव अ डिफाइंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, the very first thing is they should be clear about their objectives.
व्हाट आर दे गोइंग टू गेट फ्रॉम इट. ठीक है, वो सब्ज बाग दिखाने वाली कहानी नहीं है यहाँ पे. इट्स अ वेरी रैशनल थिंग. तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा यू कैन नॉट कटकला में डू माफ एनीथिंग. आई सब अगर क्या ऑर्गेनाइजेशन को अपना विजन और मिशन को रिकंसिडर करना चाहिए इन दैट केस? एग्जैक्टली. व्हाट डू यू से? जी जी बिल्कुल करना पड़ेगा. करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर आपको करना पड़ेगा. आई मीन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई है. एक दो चेंजिंग ठीक है, एआई जो है वो एक आ रही है, बट एक सडन चेंज जो बैक एंड पे आ रही है वो लोगों को एहसास नहीं है. लाइक मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट से बहुत डील कर रहा होता हूँ. टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन, एफएमसीजीज वगैरह हैं. एक बैक एंड पे एक बड़ी चेंज आ रही है. वो जो पुराने लोग थे जिन्होंने वो फैक्ट्रियां स्टार्ट करी थी, बनाई थी, अब उनके बच्चे यूएसए वगैरह से पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, दे आर सीइंग द होल बिजनेस इन अ डिफरेंट एंगल. वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे हैं. एक तो वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है. फिर दूसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी चेंजिंग आती जा रही है, वो न्यू जनरेशन को चीज़ें चाहिए. तो हमारे पास ना बड़ी चेंजिंग आ रही है दोनों एंड से. अब जैसे आप ना एआई को, टेक्नोलॉजी को ड्रिवन करना, अब वो किसी को आप जाके समझाओगे कैसे कि यार मेरे पास ये एआई का सोल्यूशन है. अब उनको नहीं पता, वो सुन रहे हैं बस, ठीक है, उनको नहीं पता. हाउ डू यू गोइंग टू एजुकेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल? इसलिए पहले उनका जहन साजी करना पड़ेगी ना. दे हैव टू बी क्लियर ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स. उनको बड़ा क्लियरली स्ट्रेट करना पड़ता है कि भाई देखो, दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट इज. अगर हम ये करेंगे तो यू विल गेट दिस बेनिफिट्स. उनको बताना पड़ेगा. फिर उसको रिटर्न में लाके उनकी अप्रूवल्स हैं. फिर सेकंड जो है ना, हमने एक गैप एनालिसिस करना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे ऑलरेडी हैव, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग. ये सारी चीज़ों को ना गैप एनालिसिस करना पड़ेंगे. देखना पड़ेंगे कहाँ पे इनकी ज़्यादा बड़ी लैकिंग आ रही है, हाउ थिंग्स कैन बी चेंज. क्योंकि ऑपरेशन तो आप नहीं रोक पाएंगे ना, आपको ऑपरेशन को भी साथ लेकर चलना है और इसको भी इम्प्लीमेंट करना है. तो वो एक पूरा एक लॉन्ग जर्नी प्रोसेस है जो कि थर्ड फेज पे आ जाता है. आपको एक रोड मैप चाहिए. दैट होल रोड मैप विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ थिंग्स. द वेरी फर्स्ट थिंग इज विलिंग मैनेजमेंट. अगर वो ओके हो जाते हैं, हाँ ठीक है, देन यू कैन मूव ऑन. देन व्हाट दे हैव, व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज, उसके ऊपर फिर आप उसको रोड मैप एक डिजाइन करके दे सकते हो, भाई ये है. इन द फोर्थ स्टेप वो पायलट प्रोजेक्ट उनको फर्स्ट देना पड़ेगा कि आपने तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले ली है. ओके ठीक है, अब हम आपको, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, मैं तकरीबन 15-20 दिन का एक डेमो देता हूँ. जी देखें, ये हमारा प्रोडक्ट है, एनीथिंग, माई ERP सोल्यूशन, माई साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन. आई गिव देम 15 डेज ट्रायल. आप इसको टेस्ट करो, यूज करो. आपको समझ में आता है, ठीक है, वी विल मूव ऑन. नहीं समझ में आता, विल डिस्कस कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई. क्योंकि उनको सिखाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना. उनकी विलिंगनेस चाहिए. वंस दे आर ओके विद इट, यू कैन मूव ऑन. आप जैसे कह रहे हैं बिजनेस की अलाइनमेंट, उसके गोल्स हैं. उसके गोल्स क्या हैं? इन वेरी शॉर्ट, बिजनेस नीड्स टू बी ग्रोन एंड गेट मनी. उनको तीसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता. उनको भाई ग्रोथ चाहिए और रेवेन्यू चाहिए, दैट्स इट. Yeah. अब उनको उस प्रोस्पेक्टिव से लेकर चलना कि देखें इसमें आपकी ग्रोथ कहाँ है, दैट्स वेरी बिग. क्योंकि हम अगर ऑन बिजनेस स्केल्स देखें, हम कहते हैं ग्रोथ होगी तो फाइनेंशियल विल गेट. अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल से बात करूंगा तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगी. वो एक चेंज देखना पड़ता है. तो उनको ग्रोथ समझाना पड़ती है कि यार हाउ मेनी कस्टमर एट अ टाइम यू कैन डील नाउ. पहले तो आपके पास 10 या 15 या 20 चलो कॉल एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो उनको एंटरटेन कर सकते हैं. नाउ यू हैव अनलिमिटेड ऑलमोस्ट. अगर आपको 100-200 लोग अगर कॉल कर रहे हैं तो आपका चैटबॉट वगैरह जो उसको एंटरटेन करेगा. अब आपके पास लाइन क्यों नहीं लगने वाली. फिर कॉल एजेंट्स के पहले टाइमर होते थे कि भाई आपको टाइमर लगे हुए हैं. अब आपके पास टाइमर क्या है, उसने सीधे सीधे सवाल पूछना, सीधा सीधा जवाब दे देना. इधर उधर की बात होगी नहीं. कोई उससे इररेलेवेंट सवाल पूछेगा, वो रिपीट करता रहेगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें समझानी कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम आपका किल होना स्टार्ट हो जाएगा, टाइम आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रिसोर्स बचना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये चीज़ें मैनेजमेंट को उसको एजुकेट करना है. अच्छा, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसको ड्राइव करना, मैं कहता हूँ अभी कबलस वक्त है. अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो, कोई हॉस्पिटल या कोई
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस तरह की नहीं आई जहाँ पे हम बोले यार AI 40% या 50% इनेबल्ड है। तो वो अभी हमें पता नहीं है कि एक्चुअल इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अभी मैंने ना हम लोग से अभी मफरूजों पे बात करें कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, अच्छा बुरा दोनों। बट वो मैनेजमेंट को एक चीज तो क्लियर है ना कि दे हैव टू मूव, करना है, इसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। SSGC जैसे जमील भाई को यहाँ पर है, इट्स नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ह्यूज थिंग। बल्कि एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में तो दुनिया की सबसे बड़ी गैस इंडस्ट्री यही है, यस। और कोई है भी नहीं इतना बड़ा। राइट। तो उनके इन्वायरमेंट में किसी भी चीज को इंडक्ट करना, दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। जी। यानी किसी छोटी इंडस्ट्री में कोई चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे, विल टेक 3 to 4 months, 6 months मैक्सिमम। एग्जैक्टली, यही यही सवाल मैं उनसे आगे लेके चलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त से, सर सर। कि जैसे आरिफ साहब ने फरमाया कि जो डेमो जो करते हैं जस्ट टू कीप द कस्टमर एंगेज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द foreseeable benefits of this AI. तो जमील साहब, आपके कॉन्टेक्स्ट में लेट्स इफ वी कंसिडर द SSG सिनेरियो, तो डेफिनेटली जो लीडरशिप है उनको भी तो हमने बेसिकली अवेयर करना है व्हाट could be the potential benefits of this AI technology adoption, what gonna be. तो एजुकेशन का जो एलिमेंट है in order to ensure कि ये change, because this change gonna affect each and every layer within the organization, starting from the management, लीडरशिप, मैनेजमेंट, एंड देन हमारे डाउन द लाइन कोर ऑपरेशंस, काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी इस टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन की वजह से। तो उससे पहले उनको एजुकेट करना, वर्क फोर्स को रेडी करना उसके लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि इस बड़ी चेंज को अनेबल करने के लिए हु शुड वेयर द हैट, कौन CEO और C-suite के पास जाए सबसे पहले, जो है वो घंटी कौन खड़काए? जी, ये बहुत ही एक बड़ा ही अहम मतलब सवाल है। पर्टिकुलर, बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही जबरदस्त किस्म का, ये वेरी राइटली पॉइंटेड आउट एक कंसर्न है, जिसमें वी नीड टू means we need to be very very clear that how we are going to take this initiative and move forward with that. The thing is that if we talk about the AI in an organization, you cannot say that I will automate and fully means shift towards AI in finance first. Then I will move to procurement. Then I will see the distribution. Then comes the transmission. In AI adoption, what you need to do is that first of all, you need to educate each and every means C level or corporate level heads, and we need to brief them in a way that when you are talking to the customer support head, you need to select the business cases or used cases within that organization from the customer support department. When you will pitch that solution to the head of customer support, he will very conveniently digest that, absorb that, that yes, this AI tool is going to make a case for me, and if we work on that, we will be able to bring value addition to our organization. And if we go towards the billing side, if we pitch the billing used cases to them, they will absorb that. So first of all, we need to educate the corporate head levels and convey them in a very very clear way that what this technology is, what this technology is going to do, what value addition this will bring. And the ideal situation will be when you will take a used case within that organization and present that to them, that this is the problem statement, this is what we are planning, and this is how we will do. Though the prototype will not be ready at that time, but they will be eager to know whether it's going to be done or not. Like if you see in the agri-tech, AI is has been adopted on a very massive level now. You see they are harvesting, they are
means cutting, they are gathering, and they are doing a lot of stuff, and that is humanly not possible to means give such a huge output in a very smaller time. So what we can do is that we can present them, and tentatively we can share the results of that, because with the AI adoption, you will no more be on intuitions or estimations or your gut feels. Like if you are delivering 150,000 bills a day, you can tell them that at the moment you are concluding this assignment in 10 hours by utilizing 16 resources. With the AI adoption, it will be much easier for you to pitch that only with 4%, by engaging only 4%, we will engage them for 2 hours, and we will deliver the same bills in a very much efficient manner. And Right. that is going to absorb, make that thing absorb for them, that yes, this is making a change, and we can use the remaining people in some other areas where we need more improvement and optimization, because target based systems where you cannot delay that, like bill delivery, there is a compliance from the regulator that need to be delivered at least 2 weeks before the due date. Yeah, right. Jamil, I would definitely, there is no second opinion to that. There is like a lot of endeavors within the organization where it needs to be looked at. What are the improvement areas and what AI contribution can basically deliver and improvise in terms of process efficiencies, profitable increase in profitability, education of workforce, and all that. But the bigger question is, which I was trying to ask, I think, let me ask it in a different ways. Okay, the bigger question is that where to start. While discussing previously about the strategy, when generally leadership needs to answer all those five W's, right? Why we are doing it, how we gonna do it, who gonna do it, when and where, and all that. So in order to answer all those questions, we will have our vision mission revised. But the question remains that where to start? Where are our crown jewels? So I would like to take both of your opinions. Let's continue, Jamil Sab, on this front, and then I'll come to Arif Sab. Yes, for addressing that, what we can do is that first of all, we need to identify the people in the senior management which are more inclined towards the technology adoption, and the corporate managers which have better idea about the technology. And based upon that, what we can do is that we can make a committee or smaller consortium, because only technology or only business, they both cannot implement that AI system. For that, you need the technology people, the functional people, the business people. So the corporate heads of these business lines, we can make a committee of that, and that committee can means identify the use cases, and then down the line they can means build a team of technical and functional people who can somehow prepare a prototype for that, and that can be presented to the senior management of top level senior management, C level position. And then only we will be able to convey the implementation, the advantage, and the value addition of that AI system within the organization. Certainly, that's from a technological contribution and foreseeable benefits from AI perspective. But बहुत सारे ऐसे benefits आरिफ साहब होंगे जो कि AI can bring but may not be relevant to the organization. So, how's your what's your take on this thing? Why not to start from problem identification and helping them developing the business case in order to convince the leadership that AI can solve your business challenges this way. So, what's your take on this? अच्छा इसमें ना
آپ جس طرح پوچھنے کے یہ اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے، ایکچولی یور کوشچن از ویئر ٹو اسٹارٹ کیا؟ وے ٹو اسٹارٹ. میں نے ابھی تک جو لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، جو کیسز میرے سامنے ہیں، آئی ہیو نارملی آئیڈینٹیفائڈ 2 to 3 پلیسز کہ یار یہاں سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. لائک فرام دا اسٹارٹ میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں، کسٹمر کیئر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا وہ ایک فرق اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ، ہمارے پاس نا ڈیٹا بیسز کے ایشوز ہیں، رپورٹنگ کے. وی کین آئیڈینٹیفائی، سیپ نے بھی یہی انٹروڈکشن کرائی ہے کہ اس نے اپنے پروڈکٹ کے اندر اے آئی کو جو انٹیگریٹ کرا، تو انہوں نے جو پریزنٹیشنز دی، جو ساری چیزیں دی، دیٹ واز ٹوٹلی آن رپورٹس. یو کین جنریٹ اینی کائنڈ آف رپورٹس بائی اے آئی. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ایکسپیکٹ دیٹ کین بی پریزنٹڈ ٹو دا بزنس ان ویری ایزی ٹرمس. ایون اے لے مین کین رائٹ، ہاں بھائی مجھے یہ انفارمیشن چاہیے، ٹک وہ اس نے ٹر بنا کے دے دیا، تو ایک ان کو ریزلٹ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. اوکے یہ ایسے کام کرتا ہے، اوکے میں اس سے یہ چیز لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوگی، چیزیں بننا اسٹارٹ ہوں گی. اچھا ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. اینڈ ویری آنیسٹلی نارملی جو ہے ابھی تک ہم ان چیزوں سے باہر نکلے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کی پراپر امپلیمنٹ نہیں کر پائے. کیونکہ اے آئی کا جو بیسک مسئلہ وہ ہے کہ اس کا ڈیٹا فیڈ کرانا. ہوز گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ وہ گھنٹی کون باندھے گا؟ وہ اے آئی کی امپلیمنٹیشن گھنٹی تو آئی ٹی کے گلے میں ہی آنی ہے، وہ تو آپ کچھ بھی کر لو، مگر وہ گھنٹی کون باندھے گا یار؟ ڈیٹا. اب آئی ٹی تھوڑی ڈیٹا بھرتا ہر چیز کا. تو وہ جو لرننگ ایکسپیکٹ ہے نا، وہ اس کو سکھانے والا، دیٹس اے گوئنگ ٹو بگ چیلنج. اور میرے خیال میں ایک بڑا بزنس بھی بننے والا ہے کہ اب آرگنائزیشن اس طرح کی سامنے آئیں گی، بولیں گے یار ہم آپ کا ڈیٹا فٹ کر کے دیں گے. جی میں اسی حوالے سے ایک اگر اجازت ہو تو سر almost like during the corona period, I happened to join a panel, online panel, for the North American market. There was a conference in Canada. So wahan pe it was been very highly said, like there is no AI without IA. So the IA stands for information architecture. سو جیسے آپ نے رائٹ فلی سیڈ کہ اگر ڈیٹا کو ہم پراپرلی ڈاؤن دا لائن اسٹرکچر نہیں کریں گے اینڈ دا ڈیٹا فیڈز آر ناٹ ایز ایکوریٹ ایز اٹ شوڈ بی، تو ڈاؤن دا لائن کوئی اے آئی سسٹم دنیا کا جو ہے نہ پراپرلی چلے گا. اس کے ٹیسٹ ماڈلز جو ہیں، اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے، اور جو ماڈلز ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں، what perceived results what we are looking for, it will not never ever give that same. تو اس کی بہت بڑی آئی تھنک وی نیڈ اے سیپریٹ پینل ڈسکشن آن دیٹ. بٹ بریفلی عارف صاحب، what's your take, what's your recommendation in order to initiate an effective data governance program in an organization? یہ ڈیٹا گورننس کا جو ایشو ہے نا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اصل میں کمپلائنس کو سمجھنا ضروری ہے اس کے لیے. Well, that's a business driven trigger, that's a driver basically. وہ کمپلائنس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہے. وی یوز آل کائنڈ آف فینسی ورڈس نا، بٹ اس کو نا روح کو سمجھنا، اس کی اسپرٹ کو سمجھنا، دیٹس اے چیلنج. ہم نارملی ایچ آر کو دیکھیں یا آڈیٹرس کو دیکھیں یا کسی کو بھی دیکھیں، وہ کمپلائنس اور ریگولیٹر باڈی اینڈ دس اینڈ دیٹ، بٹ وہ فیل ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، ورڈس نہیں ملیں گے آپ کو کہ آپ اس کو بول سکو نہیں یار ہی ٹرولی انڈرسٹینڈس اٹ. ورڈس بول دے گا، تو وہ کمپلائنس کا ایکسپیکٹ ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کا ایکسپیکٹ ہے، دیٹس مور امپورٹنٹ. ڈیٹا ڈریون کی جب آپ بات کرتے ہیں، اور ڈیٹا کو کس طرح لے کر چلنا ہے فرام دا انیشل، فرام دا اسٹارٹ، یہ اصل چیلنج ہے. وہ آرکیٹیکچر جس میں اس کو فیڈ اپ کرنا ہے، وہ آرکیٹیکچر ڈیزائن کس طرح ہوگا، اس میں وہ کس طرح جائے گا، اور کس قسم کا جانا چاہیے. مثال ہے نا گاربیج ان گاربیج آؤٹ، تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں دیٹ وی آر سینگ کہ ہاں یہ ہوگا. تو ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہونا ہے کہ اے آئی کے اندر سے گاربیج کون نکالے گا، اس کو بھی تو کلیئر کرنا ہے نا. انیشلی تو یہ ہوگا ہر قسم کا ڈیٹا جا رہا ہے، ڈالتے رہو. جتنے بھی ڈیٹا آپریٹر بیٹھے ہوں گے بولے وہ ڈال دے، بھی تو ڈال دے یار، بعد میں دیکھیں گے. تو جب وہ ڈیٹا چلا جائے گا، کمپائل ہونا اسٹارٹ ہوگا، اس میں سے پرابلمز آنا اسٹارٹ ہوں گے، پھر آپ اس کو کلین کرنے بیٹھیں گے. تو یو ہیو سیڈ ویری رائٹلی
کہ ہمیں وہ گورننس کا جو میتھڈ ہے نا, میکانزم جو ہے, اس کو فرام دا بگننگ اسٹارٹ کرنا پڑے گا. ورنہ ایک سال کے بعد جب آپ بولو گے یار یہ میچور ہونے جا رہا ہے یا تھوڑا سا رزلٹ دینا اسٹارٹ کر رہا ہے, وہ بگ دینا اسٹارٹ کر دے گا. عارف صاحب جیسے ایک بہت امپورٹنٹ بہت اہم جو ایک چیلنج ہے جو کہ جنرلی ڈیٹا گورننس اسپیشلسٹ دے یوزلی فیس بفور انیشیٹنگ اینی سچ پروگرام, کہ عموماً آرگنائزیشنز کی اکثریت ایسی ہے جو کہ جمود کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. دے آر ویری مچ ان ٹو دی کمفرٹ زون, دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا وے دے آر ڈوئنگ. لیکن جب یہ ڈیٹا گورننس کے اسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے, ہم ڈیٹا اونرشپ اسٹیبلش کرنی ہے, اینڈ دین what you call جو ریلیٹڈ رسکس ہیں, ہماری ڈیٹا بیک اپ اینڈ ریکوری اسٹریٹجیز ہیں. سو کافی کچھ جو ہے نا گراؤنڈ لیول پہ آرگنائزیشن کو ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے دا وے دے آر ڈوئنگ ایٹ دی پروسیس لیول. تو اس میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ ہاؤ ڈیٹا گورننس اسپیشلسٹ شوڈ اور ڈیٹا اونر شوڈ what steps they should take in order to ensure کہ جو ڈیٹا آ رہا ہے that is purposeful, this is what we want to collect, this is what we want to keep, and what we are feeding into the system should be the data quality control should be as effectively working as expected. یہ نا ایک چیلنج ہے ہمارے پاس. یہ چیزیں آ رہی ہیں, ہمارے پاس 3 پروڈکٹس بن رہے ہیں AI کے اوپر, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہم فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک کمپلائنس ان کو دی ہوئی ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو فالو دس. اور میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں US کی بات کر رہا ہوں. کمپلائنس کی زیادہ بات نہیں ہے, میں نے تو ایسی کافی ایسی آرگنائزیشنز پہ دیکھا ہے جہاں پہ ڈیٹا آنر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور ڈیٹا اسٹیورڈشپ کا کوئی رول ہی ڈیفائن نہیں ہے. تو جو وہی, تو اگر یہ 2 رول ڈیفائن نہ ہو تو وہی والی بات ہے, جو آ رہا ہے آنے دو, جو جا رہا ہے جانے دو. ایسا ہی ہے. اچھا یہ تو ایک ایکسپیکٹ ہو گیا نا کہ آپ نے چلو ڈیٹا ڈال دیا, چلو اب اس کو ڈالنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. لوگوں کے دماغ میں کیا ہے جو میں فیس کر رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں پہلے جتنا بھی ڈیٹا کمپائل کرنا ہے نا, پہلے اس کو پیپر فارم میں یا جس فارم میں بھی موجود ہے اس کو پہلے سسٹم پہ لے کر آؤ. اسٹیپ 1 کہ آپ سارا ڈیٹا پہلے سسٹم پہ لے کے آئے. اب اس کو چیک کرنے کے لیے, کراس چیک کرنے کے لیے آپ نے 2 بندے اور ہائر کیے. اب اس کو ویریفائی کریں گے, چیک کریں گے, دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. پھر اس کے بعد بندہ دیکھے گا یار یہ جانے والا ڈیٹا ہے کہ نہیں ہے, کہ اے آئی کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کہ اے آئی میں جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت لمبی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جو ایک نارمل ہماری پریکٹس ہے نا, ہم نے ڈیٹا یہاں سے امپورٹ کرا اور دوسرا ڈیٹا بیس میں لیا یا اپنے سافٹ ویئر میں لیا, یہ وہ سین نہیں ہونے والا. یہ وہ پاسبلٹی نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ صرف آپ کا نارمل ڈیٹا آ سکتا ہے مگر اس سوالات و کوشچن اس طرح نہیں آ سکتے جب تک ہم یہ رولز پراپرلی ڈیفائن نہ کریں. ایگزیکٹلی وہ رولز ڈیفائن کرنے کے لیے وہ پورے اسٹیپس ڈیفائن ہوں گے, اس میں سے ڈیٹا فلٹر آؤٹ ہوگا 1-2 دفعہ, اس کے بعد جا کے یو ول گیٹنگ سم جینیئن ریزلٹس. تو پھر آپ نے بات کری کہ ان کے بیک اپ کے اوپر, اے آئی کے اندر بیک اپ سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی ہے. بیک اپ تو ہو رہا ہے کنٹینیوٹی پلان کے اندر, اگر آپ ہیں تو بیک اپ تو ہو رہا ہے, بٹ کنٹینیوٹی جو ہے نا بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کہ آپ کے پاس اگر سائٹ 1 ڈاؤن ہے تو فیل نہیں ہونا چاہیے سائٹ 2 آپ کی اپ ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ اٹ از ویری رائٹفلی سیڈ, کیونکہ یو ایس گورنمنٹ نے بھی اس کو بہت سیریسلی لیا اور ڈورا ایک لا نکالا ہے, ڈیجیٹل آپریشنز ریزیلینسی ایکٹ. اگر وہ اتنا کریٹیکل نہ ہو تو وہ اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں. دے انفورسڈ اٹ ویری لائک اگریسولی, آرگنائزیشنز ہیز ٹو میٹ. تو عارف صاحب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کچھ انٹیکس لینی ہے, انپٹس لینی ہے جمیل صاحب سے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس فائنل ٹیک وے لینے کے لیے. تو جمیل صاحب, considering this data governance, the program, how to effectively initiate, آپ اگر ایس ایس جی کو کنسیڈر ایز این ایگزامپل کے طور پہ لیں تو what challenges you can foresee and what your recommendation gonna be to our audience کہ how what relevant steps they should consider to ensure the effectiveness of the program. ڈیٹا کے اوپر جیسا کہ عارف صاحب نے بھی کہا کہ ون آف دا میجر چیلنج ہے, اینڈ اس میجر چیلنج کو ان آرڈر ٹو کیٹر دیٹ ون ویری ویری
simplest way could be that whoever owns the data owner need to be made responsible for the data accuracy, data privacy, data means credibility. Reason being that he knows. If we take an example of billing department, if there is a minor increase or decrease in the billing amount or in the unit consumed, they will immediately say that to me it seems that there is some problem in the billing calculation. Either the calculation, either the reading, either the customer, some customers are missed or some additional customer are add on into that because for reference they have previous history, and a person who has been working in billing for the past 2 to 3 years, he can very swiftly tell you that in the month of October these are the number these are the numbers we tentatively which we assume that in October in Karachi billing numbers are these. Or if we talk about interior Sindh or Balochistan, they have the number on their tips. So what we can do is that we can make them the custodians of that data, and the consolidated data is already hosted in the data center, and they can very rightly point out that even if there is no error, they can very easily point out that we need to cross check, we need to verify that whether the data is uh, means accurate or there is some anomaly in the data. So we can then and there fix that means anomaly, rather than working on the perception or working on the institution or working on the gut feel that could be this could be the reason. With the available data, if you have the accurate data, there is nothing like could be. He can instantly tell you that this is the volume which we have sold and this is the amount which we must receive. If there is a difference in the gas sold and the amount received, even if not necessarily that the number has gone down, that we have sold more gas and the amount received is lesser, we will even be concerned if the gas is sold lesser and amount is received more. Then we will be more concerned that that will be even major non-compliance, that we are selling gas of 100 rupees and getting bill of 125. That can later on be a very big problem for us. So keeping in view, what we can do is that we can make those billing team responsible for the data of billing, sales team responsible for the new connection, customer support team for the customer support data. They can very conveniently look into the data and they can very rightly point out that I can see that there is some he can raise a flag that the data need to be re-verified because the numbers to him are not comfortable. They are not the number which he can predict on the basis of the operations which he was running. So in this way, we can cleanse the data in a very better and prompt way, and the data which is being used for the AI implementation can be cleansed, made more accurate, and implementation of AI will be much better in that case, that we have the very right data and we can run our learning mechanisms and other algorithms on that data only. And one Exactly. thing for sure Jamil for sir, AI. you made a very strong recommendations though, because the business data needs to be, of course, under the ownership of the respective business areas, because they understand the core meaning of that business data. And wi- other than that, those people, it's near to impossible to ensure the right standards of quality control and quality assurance, to ensure the accuracy, relativity, and the
the reliability of the data, which is required to be fed into the AI systems to expect the foreseeable or perceived results. So, considering the time factor, I have one more very important aspect of the strategy, AI adoption strategy to be discussed, which I need to ask now, because we have discussed about the strategy part, we have discussed about the improvement part, we have discussed about people side of it, and we have discussed about the data side of it. So at the last, we need to discuss as well the technology stack as well, that because AI adoption brings an additional cost and added computing power on the our technology stack. So Arif, what's are your recommendation that an how organization can feel ready from a technology stack point of view, that they are ready to adopt the AI technologies? What additional tools they need to add in addition to the traditional servers, networks, devices, routers, and all that? What additional tools they need to acquire? एआई का जो नॉर्मल बिजनेस है ना, दैट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स क्लाउड. Mostly, but not all. नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है. समवन इज गोइंग टू गो ऑन प्रेमिसेस. Mhm. दैट्स अ ह्यूज चैलेंज. ठीक है, क्लाउड आप क्रॉस इंटीग्रेशन वगैरह करके कहीं ना कहीं से उसको लिंक अप कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा. और बेसिक एआई का जो मकसद हुआ है अभी, यही क्लाउड है कि क्लाउड बेस्ड सारी चीज़ें आपस में शेयरिंग दो और उसके अंदर काम चले. कॉन्सेप्ट तो वही ना कि प्रिंसिपली एक आपके पास इतना ह्यूज इन्वायरमेंट हो जाएगा, यू विल गेट एनी आंसर एंड एवरी आंसर फ्रॉम देयर. तो ये Now, जब भी पॉसिबल I होगा जब said सब आपस this में is शेयरिंग also करेंगे. one of the, I think for our tech leaders, this is also one of the challenge, that there are some organization such as belongs to some like sensitive industries, let's say military organizations, they cannot afford being on the cloud. So they want to use a similar, if not same technologies or AI technologies on the on-prem model, right? So this is जी सर, also something to solve for our tech leaders, that उनके साथ on-prem भी हम काम कर उन्हें रहे क्या हैं. चाहिए? जी. उनके साथ भी So हम काम कर cloud रहे will हैं. give और an opportunity to collect the data from all around the globe. So data inference and the machine learning algorithms use more better if there's a more data patterns and more data. So इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या recommend करेंगे? देखिए, हमारे पास जो नॉर्मली जैसे आपने कहा ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने आप को थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखती हैं या ऑफ द नेट रखती हैं. तो जी. हम उनके साथ काम कर रहे हैं. हमारे 4 प्रोजेक्ट उनके साथ ऑलरेडी चल रहे हैं और आइंदा 5 साल की हम बॉन्ड है उनके साथ. तो विश लिस्ट वहाँ से आ चुकी है और तकरीबन पिछले 3-4 महीने से अंडर डिस्कशन है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. अब उनका जो है ना बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कहते हैं नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए. और जब हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब आप एआई को मारना स्टार्ट कर रहे हो. एआई इज बेसिकली फ्री ना, कि उसको हर चीज़ की लर्निंग होनी है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं होनी चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है हमारा. बहरहाल, ऑन टॉकिंग ऑफ बिगर फ्रेमवर्क कि आप टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग इज नंबर 1. उस पर लोग सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी और क्लाउड पे ही ले सकते हैं. अगर आप ऑन प्रेमिसेस करने की कोशिश करेंगे, यूनिट अ सर्वर, देन यूनिट अ सर्वर, देन यूनिट सर्वर, फिर आपको उसको सिक्योर करने के 100 इश्यूज होते हैं, मल्टीपल एक्सपेक्ट्स होते हैं. वहाँ फंड ज़्यादा जा रहे होंगे, आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा होगा, वो रिटर्न उस तरह आपको नज़र नहीं आएगा फिर, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा. अच्छा, बिग डेटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स आपको यूज़ करना पड़ते हैं उसके लिए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आप सेल्फ क्रिएट नहीं कर पाते. अच्छा, एडवांस टूल एंड फ्रेमवर्क्स में अगर आपने बात करी है, तो उसमें एक ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. फिर डिप्लॉयमेंट आपको किस तरह करनी है, फिर मॉनिटरिंग एक ख़ास तौर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी. हम लोग मॉनिटरिंग पे फोकस नहीं करते, एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमें नहीं पता था, हम जैसे जमील भाई ने कहा, बार बार ऑडिट एंड कंप्लाइंस की बात शुरू से कर रहे हैं. उस तरह की मॉनिटरिंग या उस तरह की चेकिंग हमारे यहाँ नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती हमारे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आता है. अच्छा, मशीन लर्निंग हो गया या किसी भी एक्सपेक्ट से हो गया, वो चीज़ें तो अपनी जगह नहीं, बट वो वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग तो है नहीं, अगेन दैट विल वेरी.
तो जिस तरह हमने स्टार्ट करा था, तो आईओटी एक बड़ा एक्सपेक्ट होगा एआई के अंदर। मैं आज एक कमर्शियल देख रहा था कि हवावे का एक फ़ोन नया आने वाला, उसका नया अपना ओएस है, उसका नाम बोलो, बड़ा अच्छा सा नाम था उसका, एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग ऑन योर Magic फोन। OS. Its name मैजिक is ओएस। Magic OS. Yes. आप उसमें अपनी कार को पार्किंग में से निकालें, आप अपने घर में Yeah. दाखिल हो रहे हैं तो आपकी चीज़ें रेडी हो रही हैं, आप ऑफिस जा, आई मीन यू हैव एवरीथिंग ऑन योर फोन, दैट्स पार्ट ऑफ एआई। तो वो इतना रेवोल्यूशनाइज करते जा रहे हैं, उन्होंने अपना ओएस डेवलप करा एंड उन्होंने एंड्रॉइड को फारिग करा कर तुम साइड में हो जाओ, वो अपनी मार्केट चीज लेकर आ रहा है। ठीक है, जी, अभी एलॉन मस्क ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया अपना फोन, एग्जैक्टली। एंड टेस्ला इज इंट्रोड्यूसिंग व्हिच इज लाइक गोना बी यूज्ड विद द Starlink, and it will not be depending on the local traditional telcos. So and then you can use it anywhere, any part of the world without any, disconnection or the signal dependencies. एग्जैक्टली। और उसमें मेरे ख्याल में टेस्ला ने फिलिस्तीन के अंदर कोई शायद उन्होंने पैकेज वगैरह या कुछ इससे इंट्रोड्यूस कराया कि वहाँ पे फ्री है। फोन तो दे दो भाई, आप सर्विस फ्री दे रहे हो, फोन कौन देगा? जी, खैर बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। जिस तरह आप इसको चाहते हो कि नहीं एआई आए, जहाँ कॉस्ट सेविंग होगी तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग एन एडेड कॉस्ट। सो आरिफ साहब, मुझे वक्त की किल्लत का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, और मैंने वी आर ऑलमोस्ट देयर, एक्सीडेड द टाइम इन फैक्ट। तो जमील साहब का लास्ट फाइनल टेक हुए ले लेते हैं कि ऑन what organizations should consider from a technological readiness point of view before AI adoption. इसमें जो एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टोटल एआई का, दैट इज बेसिकली द डाटा, और डाटा को स्टोर करने के लिए अ सिंगल सोर्स ऑफ डेटाबेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो कंप्यूट, मतलब प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट इज द कोर रिक्वायरमेंट, बिकॉज यू विल ऑलवेज कीप ऑन मीन ट्रेनिंग your system on the model, और based upon that you will keep on improving that. So compute के लिए आपका भी जैसे quantum compute की बात हो रही है कि they are already in the process of testing the process which is going to take on the means high speed computer of the current times almost more than 10,000 years. That processing has been completed by Google in 200 seconds, and IBM is claiming that we can do that in 2.5 days. So, with the quantum compute, it will be much easier for an organization, especially for sensitive organizations. They can have their on-prem system for the compute, for training the models, for applying the algorithms, and for data storage. They have both the provisions. They can either go to the cloud, or they can have their local storage, because storage cost has also been drastically decreasing, and the storage size is very drastically decreasing. We can see that 100 GB hard drive was roughly carrying a weight of about 6 to 700 grams, but now for means 8 terabyte drive, you can very easily see that it takes not more than means a few grams. Yeah, I Means mean, you micro SD cards are now available for, like, 2 terabytes is now available commercially in the market. Micro SD exactly cards of this size. in less than 10 grams. So energy consumption has reduced, space required has been reduced, cost is also reducing, and in that way it will be much easier. Because for me it seems that for larger systems it will not be possible for you to run that system through the cloud, because you need a very bigger data pipe which can take your data to the cloud and then process that and return the results to you. But for an on-prem system, to me it seems that it will be much easier within 2 to 3 years, keeping in view the requirement, the increasing requirement, the innovations in the compute, in the storage,
it is going to be much accessible for almost all the organizations to have their own AI systems within their own premises. But for smaller organizations, they can always opt for the cloud. But main thing comes is that you need to calculate the total cost of ownership, but not for a single year. You need to distribute that at least to 3 to 5 years, and then you will be in a position to have an idea that what is my cost benefit analysis. Am I means going to have the comfort or benefit with the cloud or with the on-prem system? Very importantly said and rightfully said, like, the cost is the major factor to decide that whether we should go for an on-prem model or a cloud, though. But there is the aspect of data privacy and security as well to consider, considering the challenges from both sides. And there is, of course, the added cost, less or more either way. But the more importantly, as Arif Saab rightfully said, like, the cloud is basically, I believe, is here to empower the organizations with the rightful usage of the advanced or emerging technologies. So, being that said, we have almost completed our time, and thank you so very much, Arif Saab and Jamil Saab, for your great contribution and inputs, insightful recommendations as well for our audience and the tech leaders, business leaders, the AI leaders as well, which are part of the audience and they are listening to us, where we have discussed the AI adoption strategies, we have discussed the people side of it, we have discussed the process improvement side of it, and more importantly, data and technology as well, and how, based on using those recommendations, how effectively we can execute those strategies. With that thing said, man, thank you so very much for Arif Saab and Jamil Saab for your inputs and for being here. And thanks to the audience for listening to us. And looking forward to engage our audience once again in the next coming episodes of Technovation with Ahmed Javed. With that said, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Assalamu alaikum. Welcome. Assalamu alaikum.